A very good afternoon. Welcome back to yet another episode of the Sparktodaynews. We are going to discuss about the architecture course related. The university is Birmingham City University. Birmingham City University is located in UK, United Kingdom. And this afternoon, a very special guest who sits beside us, and they are in Sparktodaynews studio. A special guest name is we have Jacqueline Norton. She is an associate professor, and another one is Disha Gupta. She is the head of operations recruitment, Birmingham City University. Thank you so much for being here with us, and welcome to Sparktodaynews. Ma'am, you are from Birmingham City University. Okay, can you tell me a little bit about yourself? Okay, so I'm a associate professor international. I work for the Faculty of Arts, Design and Media. It's a very large university. We have over 31,000 students. I come from a design background. I was in design, interior architect for 25 years. I've worked in education for a number of years, starting part-time initially, working in further education and higher education. I worked on commercial interior design, and I work with a lot of architects, designers, and hospitality, automotive, that type of industry, retail design. And I was previously subject leader for design at our university as well. Okay. So this one is her introduction. How many courses related to architecture field in your university? Okay. It's probably good to tell you about the context. We have 5 colleges. The College of Architecture is one of our colleges, and we also have a conservatoire. So the courses at undergraduate level, we have 3 undergraduate programs. We have architecture, interior architecture and landscape architecture. We also have a number of postgraduate courses with foundation year and also professional practice as well. We have urban landscape with urban design as well. We also have design management at a postgraduate level. We also have design and visualization as well as interior architecture at postgraduate and architecture. So quite a large portfolio. Oh, very nice. Kind of facilities you provide to students who are studying over there in Birmingham City University? Okay, we have a number of campuses around the city of Birmingham. On our main campus, Parkside campus, we have facilities, CAD suites, we have access to workshops. They can access workshops across multiple sites. We also have resources in our staff. Many of them are working practitioners, working in practice. So we have access to many facilities, library facilities, electronic facilities. Okay. One another dynamic personality also sits beside us. There is Disha Gupta. Ma'am, welcome in Spark today. Thank you so much. आर्किटेक्चर कोर्स रिलेटेड बारे में जो बच्चों को वहाँ पे फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है? जब मैं फ़ैसिलिटीज़ की बात करती हूँ, जैसे अभी जैकी ने बताया कि फ़ैसिलिटीज़ सिर्फ एक स्टडी एरिया के लिए लिमिटेड नहीं होती हैं. फ़ैसिलिटीज़ सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, सबके लिए फ़ैसिलिटीज़ ओपन होती हैं. राइट फ्रॉम जब वो इंडिया में हैं, डिसाइड कर रहे हैं, फ़ैसिलिटीज़ वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती हैं. उन्हें गाइडेंस मिलती है यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्टली. सम ऑफ आवर एजेंट पार्टनर्स लाइक सागर कंसल्टेंट्स, यू कैन सी, दे आर सपोर्टिंग द यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट करने के लिए. वो गाइडेंस भी देते हैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे. बच्चा जब यूके आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्टडी, वो स्टडी भी करता है, वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है, सीखता है. प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा फोकस होती है हमारी यूनिवर्सिटी की. सो वी वांट स्टूडेंट्स टू बी हैंड्स ऑन, नॉट जस्ट विद देयर लर्निंग but their practicality as well, to be able to adapt everything on a daily basis after they learn. So एक ये अप्रोच हमारी है जो काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिलता है जिससे, एंड हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स. हमारा प्लेसमेंट सेल बहुत पॉपुलर है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिससे मिलता है, क्योंकि आई एम श्योर जब बच्चे और पेरेंट्स खास करके इतना इन्वेस्ट करते हैं अपनी ओवरसीज़ एजुकेशन में, तो उन्हें अपना फ्यूचर भी जानना है. एक डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ फ्यूचर भी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट BCU डज़. और इसीलिए अगर हमारी वेबसाइट बच्चे देखेंगे तो दे विल रीड अ स्टेटमेंट दैट वी आर अ यूनिवर्सिटी फॉर बर्मिंघम. हम अपने आप को ये बोलते हैं. We are also having a global footprint, like Jackie spoke about. हमारे 4 campuses हैं. एक तो UK में जो of course सबसे popular है. We have a campus in Russell Khema. We have a campus in China,
एंड हमारा एक छोटा सा कैंपस इन कोलैबोरेशन विद हीरो मोटर्स इज़ इन लुधियाना एज वेल, जहाँ पे हम STEM फोकस, आई एम श्योर STEM सब ने सुना होगा, विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, बट BCU can never do without art. BCU is all about art always, which is why we don't have a normal STEM learning, we have a STEAM house which has a tint or a curve of art in it. So that is why we are so popular, and इसीलिए मेन जैकी आज इंडिया आई हुई हैं, बिकॉज हमारा आर्ट डिज़ाइन मीडिया का स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. हमारी रैंकिंग है top 5 in UK and top 200 in the world, and I'm sure Jackie would elaborate a lot more on that because she's the subject matter expert out here, and I think students को सबसे ज़्यादा benefit ये interview देखने से आज मिलेगा, because they will be able to hear it from Jackie directly of what all can we help them with. आई थिंक सो दैट आपकी हिंदी सुनकर लग रहा है कि यू आर यूज्ड टू अबाउट दिस लैंग्वेज. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. मैं इंडिया से ही हूँ, ओरिजिनली मैं मुंबई से हूँ. आई एम नाउ बेस्ड इन दुबई. मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट में आई सपोर्ट अ लॉट. Zaki ma'am, you came here in first time, sir? First time to this area. I've been coming to India probably for about 10 years. First time I visited was Mumbai. Then I've also been to Coimbatore and Chennai. Okay, Coimbatore is in south. Okay. Yeah. The next question is, does the program offers the internship? Yes. Who are studying over there? Okay, so we have in architecture, for example, we have a thread of live projects throughout the academic course. We have a module in architecture, as an example, called Praxis, and each student has a 2-week placement with an industry partner. And over the last 3 years, I think we had 100 internships, companies that we worked with. We also have live projects, and we also have awards as well, so career awards from industry, so internships as well. There is a lot of advice for graduates. We have graduate schemes, and we also employ some of our students. So beyond their study, we have KTP, so knowledge transfer partnerships, where you work with industry. There are opportunities for students to apply for. So there are many opportunities to work with industry and live projects and internships throughout your study. Yes, very nice. How does the architecture program at Birmingham City University prepare the students for the professional practice? Yeah, I think there's a common thread all the way through, and there's different levels. So you learn practical skills, you learn process skills, you learn about the legal and financial constraints of architecture. You also learn construction skills. So all the time you're working with architects, so practitioners, part-time staff we have coming in, we have live lectures, so they always have contact, so they build their networks. In their first year, they're encouraged to upload their portfolios on a blog. We encourage them to access LinkedIn, build their professional profile, so separating their social media from their work social media. I think that's important, so we try and prepare them right from the beginning. Okay. दिशा मैम, ये बहुत बड़ी बात बनती है जब आर्किटेक्चर फील्ड में जाओ तो बच्चे प्रैक्टिकल होने चाहिए. इट्स अ थियरिकल नॉलेज इज एज वेल एज इम्पोर्टेंट, बट प्रैक्टिकल नॉलेज वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. तो काइंड ऑफ प्रिपेयर, कैसे वो प्रिपेयर करते हो बच्चों को वहाँ पे? सो जैसे मैंने अपने पहले आंसर में भी मैं आपको बता रही थी कि BCU का एक बहुत फोकस होता है कि एक बच्चा सिर्फ एक डिग्री लेके ना निकले, बट एक एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रेडी, स्किल सेट के साथ निकले, सो दैट ही इज़ रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड ही इज़ रेडी टू एक्वायर अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल सेट एंड नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिग्री. यस, उस पे हमारा बहुत फोकस होता है, विच इज़ वाई हम बच्चों को जॉब के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं लर्निंग में, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे पाती. खास करके अगर आप इंडिया में देखें, बच्चा स्कूल जाता है, सिर्फ लर्निंग अपनी पूरा दिन लिखता रहता है, बुक्स में पढ़ता रहता है और वापस आ जाता है. हाँ जी. इंटरनेशनल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस, एक कुछ बच्चे थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाते हैं उससे कि यार ये तो मैंने नहीं किया कभी अपनी कंट्री में, क्योंकि जब वो वहाँ जाते हैं उनका एक ब्लेंडेड लर्निंग होती है जहाँ वो पढ़ाई भी करते हैं और फिर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करते हैं, सो दैट जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है. यस, और वो अंडरस्टैंडिंग उनका स्किल सेट डेवलप करती है. सो इट्स नॉट जस्ट मगिंग एंड लर्निंग एंड रिपीटिंग एंड राइटिंग थिंग्स, इट्स अप्लाइंग देम विच गिव्स देम द स्किल सेट एंड कॉन्फिडेंस. और BCU का इस चीज़ में बहुत बड़ा फोकस रहता है कि बच्चे
प्रैक्टिकली रेडी निकलें एंड नॉट जस्ट थियोरेटिकली. It's a big thing. Yes. Ma'am, if I talk about scholarship, so does this university, Birmingham City University, offer the scholarship to the student? Yes. So we have scholarships for our international students. We have, and it's based on merit. So we have students who apply to study one of our courses. There is a £2,000 sterling discount on their first year of study. So that's for first-time applicants. Then if they want to progress on to postgraduate study, there is, again, based on merits. So, for example, if a student gets a first class, they get a £2,000 reduction, sterling. £2,000? Yes. Yeah. Then if they get a 2-2, you get a 1,500. So it's on a sliding scale. And a 2-1, 1,500, and a 2-2, you would get £1,000. So you are rewarded with a scholarship. Okay. Ma'am, यदि इंडियन करेंसी में बात की जाए तो हाउ मच द स्टूडेंट्स गेट? हाँ जी, तो हम लोग जैसे जैकी बता रही थी, एक स्कॉलरशिप है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसका मतलब कि हाँ कुछ बच्चे आते हैं जिनका एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं, पर हम उनमें स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं. मेरिट बेस्ड जो एकेडमिक प्रोफाइल है बच्चे की, स्कॉलरशिप जो रेंज करती है, जैसे जैकी ने कहा, बिटवीन 1,000 to 2,000 पाउंड होती है. 1,000 पाउंड अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें, इट्स 1 लाख से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक स्कॉलरशिप जाती है, जो कि प्योरली बच्चे के प्रोफाइल पे डिपेंड करती है. तो जब हम प्रोफाइल रिव्यू करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ऑफ़र रिलीज़ करने के लिए, उसके एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे हम ऑटोमेटिकली उनको एक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं उनके अनकंडीशनल ऑफर पे. सो इस तरीके से स्कॉलरशिप्स हैं. अंडर ग्रेजुएट में भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करने जाएँ उसमें भी मिलती है. एंड अलुमनाई स्कॉलरशिप भी हम देते हैं. जैसे एक बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट करके सीधा हमारे पास दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया, तो उनको एक अलुमनाई डिस्काउंट भी मिलता है छोटा सा, क्योंकि वी वैल्यू आवर अलुमनाइज अ लॉट एंड वी वांट टू ग्रो दैट नेटवर्क. तो हम अपने चाहते हैं अपने अलुमनाइज को अपने पास ही रखना, जिसके लिए हम उन्हें एक एडिशनल स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं. सो यस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को, आई एम श्योर इफ वो सागर कंसल्टेंट्स आएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे तो उनको ज़रूर और देखने को मिलेंगी. Okay. Ma'am, my next question is to you this. What kind of qualities make a student proper and perfect architecture in Birmingham City University? I think they need to be open. So openness is really important. I think part of our ethos is that we prepare them not only in the technical skills, and you may have said this, but also the personable skills, the soft skills that are so important. Previously, when I taught in the classroom, in the School of Architecture and Design, and previously in the design, it was really important that we engaged well with our industry networks. We had industry come to us and ask us for students for an internship, and you could select them. They used to say, we don't necessarily want a student for their technical ability, we want them because they can communicate, they can work in a team, they can be independent and use their autonomy, but they also need to be a team player. हम क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी बात है, जब भी लड़का पढ़ने के बाद बाहर निकलता है तो वो परफेक्टली बोल सकते हैं कि प्रॉपर आर्किटेक्चर, वो बिल्डिंग बनानी हो, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने हैं, कई बड़ी बड़ी ब्रिज सब एक्स्ट्रा, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन सकती है. हाउ कैन यू गिव इंफॉर्मेशन और एजुकेशन टू स्टूडेंट? मतलब आप ये जानना चाहते हैं एक बच्चा कैसे, मतलब कौन बच्चा सही होगा इस डिग्री के लिए? सो मेरा सबसे पहला ये मानना है, बिकॉज अगेन मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एडवाइस बहुत अलग है, एंड जैकी क्योंकि एकेडमिक पॉइंट से एडवाइस देंगी कि वो बहुत सही एडवाइस है बच्चों के लिए. बट अगर मैं एक गाइडेंस की तरह से बच्चों को बताना चाहूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल एक अंडर ग्रेजुएट आर्किटेक्चर करना चाहता है यूके से, तो आर्किटेक्चर एक क्रिएटिव डिग्री है. यू हैव टू हैव दैट क्रिएटिव एज विद यू, यू नो, कि वो और आप सबके अंदर नहीं होता है. हाँ जी, वो सबके अंदर नहीं होता है. तो जिसके लिए वो है, वो पैशन वाली बात होती है. अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, आई एम श्योर आप रिसर्च करोगे, और जब आप रिसर्च करोगे आप अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, एंड वो आपका सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है टूवर्ड्स अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी. एक पोर्टफोलियो एक बच्चे की बहुत बड़ी एक
उनकी अंडरस्टैंडिंग एक यूनिवर्सिटी के लिए कि बच्चा ऑलरेडी किस कैलिबर का है, कि उसको कितना समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी प्रोग्राम के, हाँ जी, और वो कितना एक्चुअली वो पैशनेट है इस डिग्री को पढ़ने के लिए, वो एक यूनिवर्सिटी के लिए जानना ज़रूरी होता है, और वो हमें पता चलता है एक पोर्टफोलियो से। तो मेरी एडवाइस बच्चों को यही होगी, इफ़ दे वांट टू स्टडी आर्किटेक्चर, भले ही वो BCU में हो या कोई भी और UK यूनिवर्सिटी में हो, बिकॉज UK इज़ नंबर 1 जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। यस। तो आप सबसे पहले काम करें अपने पोर्टफोलियो पे, एडवाइस लें अपने एकेडमिक्स से इंडिया में जो आपको पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप इंटरनेशनली हमारे पास जैसे आप अप्लाई करते हैं तो जैकी जैसे एक्सपर्ट्स आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे एंड वो आपको गाइडेंस या एडवाइस देंगे, आपके साथ प्रॉब्ली एक वर्चुअल इंटरेक्शन करेंगे, आपको एडवाइस देंगे कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते एक बच्चे ने अगर पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गलती कर दी तो वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं। राइट, तो हम गाइडेंस के लिए बैठे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। तो मेरे को ये लगता है बच्चों को सोचना नहीं चाहिए, लिमिट नहीं करनी चाहिए अपना पोटेंशियल खुद कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ट्राई करो, अप्लाई करो, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग एंड अप्लाइंग, एंड लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। वी विल गाइड यू, वी विल कम बैक टू यू। यस Ma'am, the next questions. What career support is available to assist the new graduate to gain employment? Okay, I think because we've given them opportunities to connect and we've suggested that they get a profile, an industry profile before they come out, they've already started making their connections. We have a graduate scheme, we have an on-site careers advice, so there are many opportunities to give them advice as to what career path they want to go into. Some of the work is up to them. My son, for example, he recently completed his 3-year Part 1 architecture, so I'm growing my own in my family. And I've had an experience from a parent perspective as well, so I think the advice is really important to listen. We attended an event last night with architects and designers from the local area, and one of the things we were saying, it's important to have a mentor, and I have a mentor, somebody who taught me when I was 16. You will be drawn to a person when you're studying, and it will happen throughout your life, and they will help you with those networks, but you have to engage, be proactive, and you have to attend and really immerse yourself and be passionate, as my colleague said. Yeah. Thank you so much behalf of you. What are the challenges in current time for the architecture students? It's a big thing. There are many challenges. There are geopolitical challenges, there are socioeconomic challenges. I think the awareness, sustainability, for example, we talked about the sustainability development goals, the UN goals 2030, the importance of that. Because we at Birmingham City University embed the SDGs within the curriculum right from the outset, we are preparing them. So it's that awareness. They really need to engage well with the current things. It's currency. It's being kept up to speed, understanding the changing, the cultural context as well, because we believe that we have a big international demographic. Over 100 countries, international students come to us. So we learn from each other. So the challenges are that you need to be open, and we teach them to be global citizens so that they can take that and then understand the practice if they go and work in another environment. So the challenge is it's being open, it's being aware, and it's being current. Okay. It's true. Disha, according to you, kind of challenges student facing and nowadays? अब मैं वो चैलेंजेस जो जैकी ने बताए हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, मैं अपने हिसाब से चैलेंजेस बताऊंगी, बिकॉज जैकी ने एक एकेडमिक के हिसाब से बताए जो चैलेंजेस, बिकॉज वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं. बट अगर मैं ऑपरेशनल साइड में बोलूँ, आई थिंक अवेयरनेस मेरे ख्याल से वो बहुत कम है बच्चों को. राइट गाइडेंस उन्हें नहीं मिलती है सही टाइम पे, या मैं ये कहूँगी वो सही लोगों को सही टाइम पे अप्रोच नहीं करते हैं. काफ़ी सारा बच्चे कई बार टाइम वेस्ट कर देते हैं सोच के नहीं मे बी ओके, या गलत लोगों के पास चले जाते हैं, गाइडेंस सही नहीं लेते. तो मेरी एडवाइस सबसे पहले बच्चों को ये होगी, अपनी रिसर्च में स्ट्रांग हो आप. राइट, आज के टाइम में हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है हमारे फ़ोन पे. वी डोंट इवन नीड अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, ऑल वी नीड इज़ अ फ़ोन ऑन मोबाइल. यस, एंड इंटरनेट, दैट्स इट. आपके पास रिसर्च के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. सो वेट मत करो. मैं सबसे बड़ी एडवाइस बच्चों को ये दूँगी, क्योंकि टाइम इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. अगर आज आप सोच रहे हो कि मुझे 2
साल बाद एक इंटरनेशनल डिग्री करने का मन होगा, या मैं चाहता हूँ, या मैं मे बी आपको पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, बट वाई नॉट, आज गूगल करो उसके बारे में, आज अपनी रिसर्च करो, खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ इस एरिया में, उसके बाद सही लोग आपको खुद मिल जाएंगे जो आपको गाइडेंस देंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए. सो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है दैट बच्चे अवेयर नहीं हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है उस अवेयरनेस के लिए. ऑल दे नीड इज़ टू बी प्रोएक्टिव, लाइक जैकी सेड. अपना फ़ोन उठाएं, गूगल करें, एंड दे विल फाइंड एवरीथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर On the mobile. यस. Thank you so much, Jacqueline ma'am, Disha ma'am. They are providing information, priceless information related to the architecture course. They are belong from Birmingham City University, which is located in UK. पहले भी हमने कई बात ऐसे अब्रोड जो स्टूडेंट है वो कहीं पे पढ़ाई बाहर करने जाना चाहते हैं. इफ़ दे वांटेड टू स्टडी ओवर इन अब्रोड, वेरी बोल सकता हूँ कि कोई सीमा ही नहीं है. इतनी सारी फैसिलिटीज़ की बात की, हाउ द स्टूडेंट्स गेट बेटर टू बेटर इन नाउज डे. चैलेंजेस की बात की, सभी तरह की बात, ज़्यादातर स्कॉलरशिप की भी बात की गई. तो ये सभी जो कंटेंट है उसमें ही शामिल की गए कि जो बच्चे अब्रोड पढ़ाई करने जाते हैं और स्पेशली फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट, तो प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, फैसिलिटीज़, वी आर टॉक्ड अबाउट this kind of facilities all about. So yadi if you are going to study over there in Birmingham City University, make sure that's all facility, make sure your इन बिटवीन इंटरप्रीनर, आई कैन अभी बोल सकता हूँ कि आपके जो माध्यम है, यानी जो आपको वीज़ा करके देता है, जो आपको फाइल करके देता है, जो वहाँ पे ऑफ़र देते हैं, वो जो वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं, वो मेक श्योर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर बिलीव सिस्टम. दिस मेजर थिंग्स, this one is a Sagar consultancy, which one is a belief, which one is a, I can tell in my words, कई सालों से स्टूडेंट्स का विश्वास जो है ये सागर कंसल्टेंसी ने जीता है और कई बच्चों को सक्सेसफुली वहाँ पे भेजा भी है और पढ़ाई के बाद भी वर्क परमिट भी अप्लाई करके वो वहाँ पे वर्क परमिट पे भी रहे हो. ऐसा भी बच्चे सागर कंसल्टेंसी में है. तो एक बात, यदि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना इच्छते हो तो सागर कंसल्टेंसी का एक बार और विजिट करना ही चाहिए. कैमरामैन निखिल रावल के साथ मैं बीरेन, स्पार्क टुडे न्यूज़.